Good morning, students. Today we are going to discuss the next topic that comes under controlling, and the next very important topic is steps in the controlling process. Earlier, students, we have learned about the meaning of controlling, importance of controlling, and features of controlling. Now, students, what do you mean by the term controlling? In controlling, the manager controller checks that the work carried on according to the plans, setting standard, compare the standard with performance, right students, find out the actual performance and then find out the deviation and then taking corrective action. So students, standard, actual performance, comparing standard with performance. If there is deviation or difference, then find out the reason of such difference or deviation and then taking corrective action. This is how controlling works. As you know, students, there are 5 functions of management. The very first function is planning, then organizing, then staffing, then directing, and then controlling. Planning is the first, the base, the prime function of management, students. In planning is a thinking function. Planning helps decide in advance what to do, where to do, how to do, and who is to do it, students. Now, the second function of management is organizing function. Organizing functions means creating authority responsibility relationship, right students, and getting the resources maximization use. Resources consist of physical, financial, and human resources. Now the next topic is staffing. Staffing have, as you already done, students. What do you mean by the term staffing? Putting right person on the right job. That comes under staffing. Staffing is the key function of management. Now what do you mean by the term fourth function, that is controlling, students? Controlling is the heart of management process. Right students, controlling means deciding in advance what to do, right students, and telling your employees that they do it in the best and cheapest way. Right students, in directing, instructions, guidance, counseling, and motivation of employees are needed. The relationship between superior and subordinates comes under directing, students. Now what do you mean by the term controlling? Controlling is supposed to be the last function of management according to planning cycle, controlling cycle. Planning and controlling are interrelated and interdependent activities, though controlling completes one cycle of management, students, and starts the other cycle. I hope, students, this is very much clear to you, controlling function. Now come to the process of controlling or steps of controlling. I tell you, students, कि जब भी steps आते हैं या process आता है किसी भी topic का, so you don't have to change the subheading. It is very much compulsory, students, that you have to learn stepwise all the material in the process or in the function of any topic. You have to learn the stepwise. अगर students आपने steps को ऊपर नीचे कर दिया है तो वो गलत हो जाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा, because जो chain है वो stepwise चलती है, students. So in controlling you have to learn the stepwise, right? So let's begin the process of controlling, students. Steps in controlling process. The very first step in controlling process is, students, setting up of standards. Now what do you mean by the term standards? Standards means मैनेजर कंट्रोलर अपने एम्प्लॉयज को वर्क देगा कि टुडे दीज आर द स्टैंडर्ड्स, राइट. स्टैंडर्ड्स आर टू बी मेजर्ड इन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म्स, राइट. टुडेज स्टैंडर्ड रेट्स गिविंग बाय द मैनेजर कंट्रोलर टू द वर्कर्स इज कि 100 गुड्स आज बनाने हैं ईच वर्कर को. सो स्टैंडर्ड आर 100 गुड्स, राइट, और 100 गुड्स दीज आर द क्वांटिटी. एंड क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड्स ऑल्सो देयर कि वो 100 गुड्स की क्या क्वालिटी होगी. दैट कम्स अंडर, स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग प्रोसेस, राइट. स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर्स आर मेजर्ड, स्टूडेंट्स, right. So let's start the controlling process, students. It is very much important topic and you have to learn, right, chain wise, step wise, students, right. In controlling process there are 5 steps. The very first steps is setting up of standards. Now students, standards are the criteria against which the actual performance may be measured. These standards must be clearly defined. Standards must be clearly defined. Work must be clearly defined to each and every worker working in the organization. Must be understandable and realistic in nature. Right, students? It must be understandable to the workers and realistic in nature.
Standard can be set in both quantitative as well as qualitative terms. Right, students? Whatever the standards has to be set, the standard has to be set both quantitative as well as qualitative terms. Now, what do you mean by quantitative terms? Right, students? Quantitative terms में आपने 100 गुड्स बनाने के लिए दिए हैं, उस 100 गुड्स में क्या क्वांटिटी हो सकती है? Standards are expressed in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, units to be produced and sold. Now student, this is the main point, units to be produced and sold. This is supposed to be the main standards for each and every company that are going to do and that are going to given by the workers, to the workers, students. So standards are expressed in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, or units to be produced and sold. Right, students, unit to be produced by the workers and given by the management or manager controller to the workers. In quality terms, now what are the quality that comes under standards? Standards के अंदर क्या quality होनी चाहिए, workers को क्या quality standards को procedure को follow करना है, what are the protocol followed by each and every worker working in the organization while making standards or work, that comes under qualitative standards. Now qualitative terms, improving goodwill and motivation level of employees. The standards are revised from time to time, keeping in mind the changes of business requirement. So I hope, student, the first step is very much clear to you. Right, students? So let's discuss the very first steps in the controlling process. Setting up of standards. Standards are the criteria against which the actual performance may be measured. Right, students? अगर किसी वर्कर की आपको actual performance measure करनी है तो आप उसको कैसे measure करेंगे? Through standards. These standards must be clearly defined, must be understandable and realistic in nature. Standards can be set in both quantitative as well as qualitative terms. Right, students? In quantitative terms, standards are expressed in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, units to be produced and sold. In qualitative terms, improving goodwill and motivation level of employees. Right, students? The standards are revised from time to time, keeping in mind the changes of the business environment. Right, students? And the changes of the business environment are related to 5 things, students: economic environment, political environment, social environment, technological environment and legal environment. These are the 5 environments जिससे कि बेटा आपकी qualitative terms change हो सकती है. Right? So I hope the very first step is very much clear to you. Now come to the second step, measuring of performance. Once the standards are set and it has to be made and it is to be done, the second step under controlling process is manager controller measure the performance of each and every worker. Now the manager controller can how to perform the measuring of each and every worker. It consists of 3 things, students. The very first is sample checking, second is performance report, third is personal observation. Let's discuss one by one. The very first is sample checking. Manager controller production room में जाके देखेगा और एक sample को उठा के test करेगा. If the manager controller is satisfied with the sample, it means sample checking is done and the production is going on as per the standards. Right? Second is performance report. हर एक वर्कर की performance report at the end of the day after the standards are complete वो manager की table पर होगी. Now the third one is personal observation. रूम में जाके देखेगा प्रोडक्शन के कि that everything is going as per the standard and the workers are doing their best. So that comes under measuring performance. Let's discuss, students, the second step, that is known as measuring performance. Once the standard have been established, the second step is to measure the actual performance. It can be done by using several techniques like personal observation, sample checking, performance report, etc. Right, students? And while doing all the 3 things, both quantity as well as quality aspect has to be taken in mind by the manager controller. It is very much necessary. Right? So both quantitative and qualitative aspect should be considered by the manager controller. Now come to the third one, students. Compare performance with standards. Right? Setting up of standards हो गया, measuring performance हो गया. Now compare performance with standards. You have the manager controller compare the performance with standards. I hope this is very much clear to you. So
आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस. कितने दिए थे और कितने बनाए. देर आर थ्री कंडीशन स्टूडेंट्स. लेट इज द एग्जाम्पल कि स्टैंडर्ड 100 गुड्स हैं तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. या तो 100 पूरे बने होंगे, या 100 से कम बने होंगे, या 100 से ज्यादा बने होंगे. मैनेजर कंट्रोलर को प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स अगर 100 गुड्स दिए थे 100 बनाए. इफ द स्टैंडर्ड्स आर सेट और मीट आउट. मैनेजर कंट्रोलर को तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स कि इफ 100 गुड्स दिए थे और थोड़े से ज्यादा बन गए, नो प्रॉब्लम. मैनेजर कंट्रोलर और मैनेजमेंट को प्रॉब्लम तब होगी जब द स्टैंडर्ड्स कैन नॉट मीट द परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड आर द परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड. 100 गुड्स दिए थे और 90 बनाए. Right students, so compare performance with standards. So these are the deviations. Right students, 100 दिए थे 100 बनाए, no deviation. 100 दिए थे 110 बन गए, this is the positive deviation. Positive deviation में मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजर कंट्रोलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 100 दिए थे अगर 90 बनाए, उस कंडीशन के अंदर बेटा, उस कंडीशन के अंदर देयर इज प्रॉब्लम. द डेविएशन में बी, द डिफरेंस में बी इन नेगेटिव फॉर्म. प्रोडक्शन कम हो गया. नाउ हियर द मैनेजर कंट्रोलर वर्क्स स्टार्ट अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन. Right? So let's discuss students. Compare performance with standards. After measuring the performance, the manager compare the actual performance with planned performance and standards. If there is match in both, then the controlling function ends there only. Controlling process students यहाँ पर खत्म हो जाता है अगर जो स्टैंडर्ड है और उसी के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई है. इफ द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस मीट आउट, जितने दिए थे हर एक वर्कर ने उतने बनाए हैं, तो मैनेजर कंट्रोलर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड्स हियर. बट इफ देयर इज मिसमैच, राइट स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव वे, इन माइनस वे, जितने दिए थे उससे कम बने, देन द कंट्रोलिंग फंक्शंस बिगिंस, देन द कंट्रोलिंग फंक्शन गोज ऑन, देन द कंट्रोलिंग चेकिंग फंक्शन गोज ऑन. राइट? सो इफ देयर इज मैच इन बोथ द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड here only. But if there is mismatch or deviation means students difference. But if there is mismatch or deviation, then the manager find out the reason or extent of deviation. Reason or extent of deviation. If there is minor deviation students, अगर minor deviation है, minor difference आ रहा है negative, तो it may be ignored. 100 दिए थे, अगर सबके 1-2 का डिफरेंस आ रहा है, एवरी वर्कर या कुछ वर्कर से 97, 98, 99, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर कंट्रोलर की वो कितना नेगेटिव या कितना माइनस का डिफरेंस को झेल सकते हैं. दैट कैन बी इग्नोर्ड. बट इफ देयर इज मेजर डेविएशन कि 100 दिए थे 80 बन रहे हैं, 100 दिए थे 85 बन रहे हैं, 100 दिए थे 70 बन रहे हैं, दैट इज द मेजर डेविएशन. नाउ इट शुड बी रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट एंड टाइमली एक्शन इज रिक्वायर्ड. राइट स्टूडेंट्स? So, but if there is mismatch or deviation, then the manager find out the reason or extent of deviation. If the deviation is minor, then it should be ignored. But if the deviation is more, then timely action has to be taken. Right, students? I hope this is very much clear to you. This is supposed to be the third step, student. Now come to the fourth step. Fourth step is very much important step, students. As you know, students, कि कंट्रोलिंग फंक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि जितने दिए थे और वर्कर्स ने उतने ही बनाए. स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस सबके मैच हो रहे हैं, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस और कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स हियर, क्योंकि काम पूरा हो गया. बट इफ देयर इज डेविएशन एंड डेविएशन इज इन नेगेटिव फॉर्म, प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन से कम बने हैं, देन द फॉलोइंग प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड. ये सारा का सारा प्रोसेस फॉलोड करना पड़ेगा. मैनेजर कंट्रोलर बिल्कुल एंड तक जाएगा. सो एनालाइजिंग डेविएशन. इन कंट्रोलिंग डेविएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव डेविएशन मीन्स प्लस में चले गए गुड्स 100 से ज्यादा, और नेगेटिव डेविएशन मींस लेस में चले गए गुड्स 100 से कम. पॉजिटिव डेविएशन मींस दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. नेगेटिव डेविएशन मींस द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. दैट स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट डेविएशन मस्ट बी पेड मोर अटेंशन एज कंपेयर टू माइनर डेविएशन. In this regard, manager use critical point control and management by exception. For the negative deviation students, manager controller has going to pass through the two stages. Manager controller has going to pass through the two techniques that is known as critical point control and management by exception. These are the two aspects, these are the two principles that comes under controlling process students. These are the two principles that comes under controlling process. The very first is critical point control and the second one is management by exception. Now let's discuss, students,
What do you mean by critical point control and what do you mean by management by exception? Now, critical point control. According to this, control system should focus on the key areas on which performance of entire organization depends. What are the key areas, what are the core areas जिसमें मैनेजर कंट्रोलर को और मैनेजमेंट को एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स करती है, राइट स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल if difference or deviation of 5% is labor cost needs immediate attention as compared to 20% difference in postal charges. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टूडेंट्स वो इफेक्ट ज्यादा करेगी 5% की लेबर कॉस्ट एज कंपेयर टू 20% इंक्रीजेस इन पोस्टल चार्जेस, क्योंकि स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर पोस्टल चार्जेस इतना इफेक्ट नहीं करेगा, पोस्टल चार्जेस का काम इतना नहीं होता है जितना ज्यादा काम स्टूडेंट्स यहाँ पर लेबर कॉस्ट का होता है. I hope student it is very much clear to you. So let's discuss the critical point control. Critical point control means manager has to focus the key areas जो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स, लेबर कॉस्ट बहुत मैटर करती है. इट मैटर्स अ लॉट, राइट स्टूडेंट्स? सो critical point control according to this control system should focus on key areas on which performance of entire organization depends. Example, a difference or deviation of 5% in labor cost needs immediate attention as compared to 20% difference in postal charges. Right students, I hope it is very much clear to you. 20% postal charges बढ़ जाते हैं, उसका कंपनी फैक्ट्री पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि इफेक्ट लेबर कॉस्ट की 5% की बढ़ने से पड़ जाएगा. The B point is management by exception. Now what do you mean by the term management by exception? It means if a manager try to control everything, he may end up by controlling nothing. अगर मैनेजर हर एक छोटे छोटे डिफरेंस को कंट्रोल करने लगा तो वो बड़े डिफरेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. सो एज पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, नाउ दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस कि मैनेजर कंट्रोलर को जितने भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जितने भी बड़े डिफरेंस है, पहले उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, छोटे डिफरेंस पे बाद में आना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट्स. देयर आर 3 वर्कर्स. तीनों वर्कर्स को 100 गुड्स बनाने के लिए दिए हैं. ए वर्कर ने 100 गुड्स पूरा बना लिया, नाउ इट इज ओके. बी वर्कर ने 95 बनाया, सी वर्कर ने 80 बनाया है आउट ऑफ 100. सो सी वर्कर की जो परफॉर्मेंस है, जो डिफरेंस है, उसको पहले चेक करेगा मैनेजर कंट्रोलर. देन कम टू बी, बिकॉज इन सी वर्कर की परफॉर्मेंस में 15 का डिफरेंस आ रहा है और जबकि बी वर्कर की परफॉर्मेंस में 5 का डिफरेंस आ रहा है. सो पहले सी वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक करेगा, उसके बाद 5 के डिफरेंस की परफॉर्मेंस को चेक करेगा. दैट इज अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. सो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग may end up controlling nothing. The deviations which are beyond the specific range should be handled first by manager and minor deviation should be ignored. Right students, I hope this is very much clear to you students, right? If labor cost is within an acceptable range of deviation, that is 2%, then it can be ignored. However, if the deviation is increased by 15%, it needs immediate attention of management. Right students, I hope it is very much clear to you students. So this is supposed to be management by exception. राइट. सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टूडेंट्स क्या कहता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टूडेंट्स ये कहता है कि इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग. यहां पर टेक एन एग्जांपल, वी हैव टू रिवाइज अगेन स्टूडेंट्स. इट मींस अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. द डेविएशन व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड बी हैंडल्ड बाय मैनेजर एंड माइनर डेविएशन शुड बी इग्नोर्ड. इफ labor cost is within an acceptable range of deviation, that is 2%, that it can be ignored क्योंकि जो minor deviation है students वो 2% है. However, if the deviation is by 15%, then it need immediate attention by management. Right students? क्योंकि 2% is the minor deviation and 15% is the major deviation. Right? I hope this is very much clear to you. Now come to the last step under controlling process, taking corrective actions.
What are the corrective actions taken by the manager controller in controlling process to reduce the negative deviation? कि नेगेटिव डेविएशन जितना कम आएगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस उतनी ही मैच हो जाएगी. सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजर कंट्रोलर अंडर फाइनल स्टेप, फाइनल डिसीजन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. No corrective action is required when the difference or deviation are within the acceptable limits. Right students, अगर 2% का difference और deviation है then it has to be acceptable by the management. इसमें कोई corrective action लेने की जरूरत नहीं है. But if there are deviations, corrective actions are taken such as reorganization of duties, introducing new techniques, training to employees, assignment of additional workers, introducing new techniques and equipments, permission for overtime work, improving the physical condition of work, etc. So these are the corrective actions which a manager controller has to be taken. Right students? Some example of corrective actions are defective material. If there is defective material, change the quality of defective material. Defective machinery, repair the existing machines or replace the machines. Obsolete machinery, undertake new technology upgradation of machinery. Defective process, modify the existing process. Defective physical conditions of the workers, improve the physical condition of work. Manager controller implies the measurement of achievement against the standards and the correction of deviation to ensure attainment of objectives according to plans. So I hope students these are the examples that taking under corrective actions students, right? डिफेक्टिव मटेरियल, अगर डिफेक्टिव मटेरियल है चेंज इन द क्वालिटी स्टूडेंट्स. डिफेक्टिव मशीनरी है रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीन्स और रिप्लेस द मशीन्स. these are the corrective actions taken by the manager. इनकी वजह से हमारा जो डिफरेंस हो रहा है वो ज्यादा आ रहा है, इनकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड पूरा एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स. ऑब्सोलीट मशीनरी है, अंडरटेक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी. डिफेक्टिव प्रोसेस है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. Defective physical condition of workers है, improve the physical condition of workers by the manager controller. So manager controller implies the measurement of accomplishment against the standards and the corrective of deviations to ensure attainment of objectives according to plans. Now I hope students the process is very much clear to you. Now the very first process students under this, setting up of standards. Standards can be set in quantitative terms, qualitative terms. Measuring performance, compare performance with the standards, analyzing deviation. Analyzing deviation consists of critical point control or management by exception. Then taking corrective actions. No corrective actions are required if the management is with the match performance students. Some examples of corrective actions are required students. I hope this is very much clear to you. Now thank you students.